हम्म हुशार असून तो त्याच्यामुळे. हम्म 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 चलो गाइस स्टार्ट करें। ये सब कर सकते हैं। मैत्री मैम आ गई हैं। और मैथी आ गई, अच्छा। श्रीकांत आया नहीं? नहीं, श्रीकांत सर भी नहीं आए। और क्या नाम उनका, अपूर्वा मैम? वो भी नहीं है। अच्छा, करते हैं, ठीक दो है, मिनट वेट 2 मिनट करते और वेट कर लेते हैं। हैं। निशांत आया क्या? नहीं। हाँ सर, निशांत आ गए। अच्छा, तो निशांत मैंने क्या बोला था, यू विल टेक केयर ऑफ रिसर्च। रिसर्च, यस सर। अच्छा, ठीक है। अभी लॉजिक के लिए किसको पकड़ेंगे? लॉजिक के लिए एडियन। एडियन, Yes, sir. you will have to give us Logic. score. Mhm. You know the Mhm. scoring system, right? No, Pratik, not fully clear the scoring system. So you have to go give a score out of 20. For Mhm. every question, you have to give both the team scores out of 20. You have to distribute 20 points between the two teams. Okay, for So if the both the logic. teams go equally well, then you give 10-10. Okay. After every question during the audience session, you Mhm. have to WhatsApp me the score. Okay. So every question is 20 score, Yeah. right? So for four You are questions, supposed 80. to focus only on the logic. Mhm. Sure. Yes. Okay. Got it. Yeah.
1 मिनट में एक बार अपूर्वा मैम को कॉल कर लेता हूँ. Sometimes she just. Fear is that she's tied up. So Nishant, you handle the logic. I mean, sorry, Adrian, you handle the logic. Nishant yeah. will handle the research and Maitri will handle the presentation. ठीक है? निशांत स्कोरिंग मालूम है ना तुमको? यस यस सर, पता है. ठीक. 20 marks for each question, right? 20 marks to be distributed between the two teams. हाँ. ठीक है? यस. चलो स्टार्ट करते हैं. जरा प्ले करो तो एक वीडियो डजन डायमंड्स का. आवाज नहीं आ रही है. आवाज आ रही है? नहीं आ रही. आवाज आ रही है ना गाइस? नहीं आ रही है. Much money as they did, but because of innovations and advancements in technology and society. These advancements promise better health, better hygiene, and better diet to the common man than the kings of the past had. This is the true advantage of innovations brought about by positive business processes. The Indian stock market represents one such positive business process. Come to Dozen Diamonds, where we have dared to imagine Indian stock market. तो कुछ कह रहे हो? स्टार्टिंग से प्ले कर दे. ओके. Did you know that the common man of today leads a better lifestyle than the kings and queens of 100 years ago? Not because he has as much money as they did, but because of innovations and advancements in technology and society. These advancements promise better health, better hygiene, and better diet to the common man than the kings of the past had. This is the true advantage of innovations brought about by positive business processes. The Indian stock market represents one such positive business process. Come to Dozen Diamonds, where we have dared to imagine an Indian stock market where the retail investor can invest without anxiety about the market volatility. Where investor does not wonder about idiosyncratic behavior of company leaders and instead focuses on the productivity of its employees. Where he looks forward to invest in the company he loves and believes in. Where he recognizes that he is in control of the future of companies he invests in, rather than trying to predict it. We believe such a stock market will bring financial well-being to the life of every Indian. Dozen Diamonds aims to simplify the market with our unique stressless trading method. Whether you're just starting out or already experienced, we aim to bring you technologies which will make investing easy so you can focus on your goals, not the guesswork. Now imagine this. You invest in a company, it grows, it hires, it innovates, it pays better, it shines brighter. And you earn and grow not just with higher returns, but with better pay and better living standards. The stock market may rise and fall, but the vision must stay steady. With Dozen Diamonds, right strategy, smart recovery from any losses, and patience, you can invest without stress. So ask yourself, where should your money sleep? In a locker of gold or in the engine of a growing India? Invest in Indian businesses. Fuel the future. Turn your capital into a catalyst. Because for your participation in the stock market to be consistent, it needs to be stressless, following the Dozen Diamonds principles of investing.
The growth of the country lies in your investment in the stock market. In the growth of your country lies your growth. Dozen Diamonds empowers every investor to achieve financial freedom through stressless investing, helping drive India forward on its path to becoming a developed nation. By building a country of investors, Dozen Diamonds strives to lead India to be the Vishwa Guru of 21st century. So should I start? Sure. Okay, guys. So today's debate topic is following trends always successful or not? And product development team opposing the motion. Okay. So let's start the first question. First question is, can success truly be achieved by simply following trends, or does it require innovation? So guys, trends are like waves. They look powerful, but they disappear fast. The real question is, do we want to ride the wave or create the next one? Because following a trend might make you visible, but innovation make you valuable. In the financial world, we have seen this story again and again. Every time there is a new buzzword, be it crypto, e-commerce, or fintech, thousands rush to copy it. But only a few survive. The reason trends fades, innovation endure. So let's look at some hard evidence, the data behind trends, the copycat problem. Between 2020 and 2023, India saw a record number of startups built on the same trend: quick commerce, digital payment, and online fashion. According to Trexon data, over 1,200 fintech startups were founded in just 3 years. But guess what? Only 3% reached profitability. Why? Because most of them were replicas. They followed what was already trending, not what was truly needed. It's like the stock market too. Once an idea becomes a trend, the advantages disappears. If everyone buying it, there is no edge left. True success in business or investing always comes from differentiation, not duplication. So now let me share a fascinating study that shows how misleading trends can be. The Music Lab experiment. In 2006, Columbia University ran an experiment called the Music Lab study. They asked thousands of people to listen to song and rate them. In one group, listeners could see how many others liked the song, and in other group, they couldn't. So the result was shocking. What you see here are two teal bars, one for independent listeners and one for social influence listeners. Notice how inequality almost doubled and unpredictability shot up. That means once people started following what was popular, success become random, not based on quality or originality anymore. That's exactly what happens in markets and startups also. We confuse popularity for quality. We assume if everyone is doing it, it must be right. But herd mentality never creates innovation. It kills it. Let's look at the stock market where trend following is real, measurable strategies. When a strategy was new, it was revolutionary. It worked because it was innovative. But once everyone adapted the same model, profit vanished. In fact, between 2009 and 2018, over 70% of global CTA funds ran identical momentum algorithms. Their correlation was about 0.9, meaning everyone was following the same trend, expecting different results. So even in investing, trend following can only survive through innovation. Let's look at the innovation versus growth plot. When India's digital wave began, hundreds of apps tried to copy Paytm. But who stood out? PhonePe. PhonePe because it innovated with a unified UPI experience. And also Razorpay because it builds an infrastructure layer, not just a payment app. They were not following trends. They were solving real problems.
Now let's move from psychology to business. This scatter plot shows the relationship between innovation value and future growth based on research by Kogan and colleagues from MIT. You can see the positive slope from firms with more innovation today tend to grow faster tomorrow. So creating trends gives compounding growth. Following them just mirror existing value. In both economics and companies, innovation is a long-term growth driver. Following trends gives early traction, but no competitive mode. Okay, now this chart puts numbers to innovation's impact. It's based on OECD data from 35 countries. On the left, you see companies that spend less than 1% of their revenue on R&D. On the right, companies that spend more than 3%. The result, those that invest deeply in innovation have twice the productivity growth over 10 years. 15 seconds left. Okay. Okay, so and they don't just grow faster, they grow smarter, adapting faster to change. In India too, we see this pattern. TCS, Infosys, and SDFC Bank continuously innovate in AI, automation, digital services, and their Time up. returns. Time. Okay, sir. Okay, so we want to hear the far side. Sales team, go ahead. Sales team. Yes. Hi, everyone. Can someone from the team please share the screen? Rohit. Rohit, Javed, Akib, anybody? Yes, sir. I'm just connecting from laptop. I'm sure. Go ahead, guys. Somebody has to share the screen. Sales team. Recording in progress. Josefa. Akib. हाँ रोहित कर रहे हैं सर से What time lag raha hai yaar? Okay, I'll start the clock. You'll lose time for this. Okay, start. Okay. Rohit, you can click on present on the top right corner. Top right. The second button beside share. Yes. Present full screen. Yes. Okay. Okay. Good evening, everyone. Today, Riya, and Rohit will be representing the sales team in this debate. And the topic is following trends always successful? We firmly believe that the answer is yes. So, when done with discipline and data, following trends can be one of the most successful strategies, both in business and in financial markets. Next slide, please. So let's start with a simple but important question. Can success really come by just following market trends without predicting and overthinking? So many people assume that following trends is a lazy or mechanical approach, but in reality, it's quite the opposite. It's evidence based. Over the next few slides, I'll show how trend following works, the research behind it, and real world examples of traders who have turned this simple principle into long term success. So, before we start, I'll just quickly explain what trend following is. It's one of the simplest yet most effective investing ideas. So, it's a rule based strategy, which means decisions are not made emotionally or based on predictions. Instead, the system simply reacts to what the market is doing. So, basically, when buy when the prices are moving upward, and then sell or avoid trading when the prices are falling. Previous slide, please, Rohit. Okay, next slide. Okay. So the biggest evidence that we have that trend following works is a research done by three well-known researchers called Brian Hurst, Yao Huahui, and Lasse Hege Pedersen. Pardon me if I'm pronouncing them incorrectly. So
They just together they wanted to answer a simple question that if we had just followed market trends over the last century without prediction, would it have worked? So they built a very simple rule based model for each market stocks, bonds, commodities, and currencies. They checked whether the prices were going up or down over the past 12 months. If it was rising, they bought, and if it was failing, they sold, right? And then they applied the same rule every month over 137 years of data from 1880 all the way to 2016, sorry, across 67 different markets worldwide. And what they found was that trend following produced previous slide only, Rohit. What they found was that trend following produced positive returns in every single decade since 1880s, even though in between that whole time world war 1 and 2 happened, the great depression happened, the oil crisis in the 1970s happened, the 2000 dot-com crash also happened, and the 2008 financial crash also happened. So that means no matter what the economy looked like or which country or asset class, following trends worked again and again. Right. Next slide, please. Okay. The next case study is the turtle trade experiment. So it happened in the 1980s when two legendary traders, Richard Dennis and William Eckhart, um, had another powerful question: can successful trading be taught, or is it something that people are born with? So Richard Dennis ran what became one of the most famous experiments in trading history, which is called the turtle trading experiment. He handpicked 14 people from completely different backgrounds. Nobody knew how to trade. So the crowd included a security guard, musician, a professional gambler, etc. Right? And he trained them for just 2 weeks on a simple trend following system. Their instructions were clear that they have to buy when the prices break above a certain level and then sell when the prices drop below a certain level, right? And while following that strategy, again, these people were not experts, they were not analysts, and yet within just 4 years, this small group of people made over $175 million in profit just by trend following. Right? So how it happened? Because the trend following system works, and most importantly, because they followed it with discipline. Next slide. 30 seconds left. Yeah. Okay. So this is one of the charts where a few of those traders in that experiment uh, got made a very profitable trade while buying silver comics using the same strategy that David had told them to follow. Next slide, please. You can skip this slide. Okay. So we Time have up. talked. Okay. Thank you. All right. Against team, you can now rebut whatever points were made by the 14. Okay, so Riya, you said in all decades it gave the positive return, right? Yes. But have you compared this returns with the growth stocks or valuable stocks? Are they Um, gave are they better returns with are they gave better returns than growth value stocks or not? so from what I read in the research, this was the most profitable trading strategies throughout all the disasters that happened throughout the decades. No. In 2009 it failed. Trend following failed. Sorry, I did not hear the last part. In 2008 dot-com bubble, trend following Mhm. strategies were failed. But from what I read in the research, they gave profit, or at least Right. It not as depends. profit. See. It depends on uh, some some formulas and some math, na. Mm-hmm. So have you do you have some math of trend following so that you can say ki, right by that math these four strategies are always successful or No, not? no, I don't have the math, but I read the research paper where it said and it concluded that throughout all these crises, the Hmm. results were See, positive. one thing I'll say, I'm not saying that trend following is never successful. It's successful in some circumstance, but it is not successful in
all cases. Okay. So is innovation. Sorry. So is innovation what you are Yeah, supporting? yeah, it's innovation. If you are innovate that strategy, then it will successful. It will be successful, right? But you can't say for sure that it will work, right? Innovation is experimenting. It Yeah, can work you can't say 50-50, you also 50-50 chances hote hain, but in this case, it is more than 50. That I can say for sure. More than more what, than 50, more than the chances that innovation gives the more traders. than 50. And mo- Sumit, there is momentum also, na, where prices that move in one नहीं direction. नहीं 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 So momentum. आके this is the rebuttal time. Okay. Only the debaters are supposed to talk. There'll be time for audience later. Okay, okay. Okay. So So what like, you can I was finish my point? yeah, sure, My sure. point is, अगर आप कोई innovation करते तो उसके 50-50 chances रहते, right? Whether it will work or not. But you are But this is a proven strategy, so I can say for sure कि 50% से ज़्यादा chances है that it can which work. Especially what it has sorry, performed so well during crisis. okay. Which Yeah. strategy you are saying? There is a lot of strategies in trend following, right? Do you have a specific name of strategies? नहीं, मैं strategies के बारे में बात नहीं कर रही. I'm talking about the century study that the 3 researchers did, right? So if you I'm only sticking to that. I'm sticking to that. okay, you are sticking to Time up for rebuttal against team. Now the sales team can go ahead and do their rebuttal. Riya, you can ask questions. Yeah, sure. So again, I would just stick to my question कि क्या guarantee है if you innovate something that it will work out. Because you know, अगर किसी ने Shark Tank देखा तो उसमें भी बहुत सारे investors है ना, companies में invest नहीं करते if they are doing something very very innovative, very very unique. They say कि इसका market बनाना पड़ेगा. So how can you say for sure that innovation 100% works? Okay, just give me an example. Give me an example. Apple कंपनी है, वो इनोवेटिव कंपनी है या उसने कोई ट्रेंड फॉलो किया था? They innovated, but there How? are a lot of other companies that tried to do the same, but failed. नहीं, Apple से भी पहले बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा, उसके बाद भी किया होगा, right? राइट, बट देखो, इनोवेशन ऐसा नहीं है ना कि हर एक इनोवेशन सक्सेस हो जाती है. Exactly, बट exactly. अगर एप्पल ने भी सेम स्मार्टफोन्स नहीं निकाले होते, ब्लैकबेरी जैसे फोन निकाल दिए होते कीपैड, तो आई डोंट थिंक दे वर सक्सेसफुल, राइट? बट हम सक्सेस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, राइट? इनोवेशन है ना, 100 में से एक बंदा सक्सेसफुल हो सकता है, बट अगर आप ट्रेंड फॉलो करते हो ना तो आपके चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो. ट्रेंड अगर आप फॉलो करोगे, अगर आपने ट्रेंड फॉलो किया और फिर उसको इनोवेट नहीं किया, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप फेल हो जाओगे. आपको इनिशियली सक्सेस मिलेगा, बट फिर आप फेल हो जाओगे, आपका कंपनी नहीं चलेगा, राइट? देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जांपल फॉर दैट. Can you give me an example? लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर जोमेटो का जब आईपीओ आया था तब बहुत हाइप था, ठीक है, और बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया पूरे 2019 से लेकर 2021 तक. देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? बट जैसे ही उनका आईपीओ लिस्ट हुआ, उसके बाद उन्हें अगले 6 महीने में 45% का लॉस हो गया था उसके इस प्राइस में, स्टॉक प्राइस में. सेम फॉर नाइका, सेम फॉर पेटीएम. ओके, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जो इनोवेटिव कंपनीज है ये सारी इनोवेशन वाली कंपनीज है, राइट? तो हाँ, अगर तुम their ट्रेंड को prices have dropped. राइट, इफ यू आर फॉलोइंग द ट्रेंड, तब क्या होता है कि तुम एक बहुत हाइप चलता है, ठीक है, बहुत हाइप होती है, पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से तुम फॉलो करते हो. बट अगर तुम उसमें कोई इनोवेशन नहीं करोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद I'm वो फेल sorry, हो but जाता है. Zomato ने कौन सा ट्रेंड फॉलो किया है? Because I thought it's the first food tech company in India. I'm not saying कंपनी फॉलो, I'm saying स्टॉक प्राइस. जो एक मार्केट में हाइप थी, ठीक है, कि सभी लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, एक ट्रेंड फॉलो कर रहे थे ना कि सभी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे, दिस काइंड ऑफ हाँ, तो ट्रेंड. ट्रेंड फॉलोइंग का ये भी रहता है ना कि आपको चार्ट्स ऑब्जर्व करते रहने चाहिए. थोड़ा भी आपको लगे कि प्राइसेस ड्रॉप होने वाले तो यू नीड टू स्टॉप. सी, आई एम नॉट सेइंग कि आप ट्रेंड ब्लाइंडली फॉलो करो. व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप प्रॉपर देन यू आर सेइंग स्ट्रैटेजी फॉर के द साथ, राइट, आई एम सेइंग नो नो देन नो यू नो हैव आई एम सेइंग कि अगर आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हो ना, उसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, रूल्स होते हैं, देन यू आप हैव अ उसको डिसिप्लिन, फॉलो राइट? करोगे, ओनली राइट, देन राइट, यू विल राइट. बी सक्सेसफुल. ओके. डिसिप्लिन होते हैं ना कि हमें कब क्या करना है, और डिसिप्लिन आर वेरी डिफिकल्ट, रूल्स आर वेरी डिफिकल्ट. यू कैन प्रिडिक्ट कि कब क्या होने वाला. कभी कभी क्या होता है कि Okay, नहीं नहीं, rebuttal time is up. Now let the audience participate. I want to intervene in between. What you said, okay,
जोमेटो एग्जांपल राइट सुमित, तो आपने बोला कि 45% डाउन था, फिर जोमेटो ने इनोवेट किया. जोमेटो डिडंट इनोवेट, जोमेटो I'm एक्चुअली not. फॉलोड द ट्रेंड. See, you didn't understand the Let me complete, example. let me complete, You, let me complete. Richa, you did not understand the example. No, 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 मैं I get it, but let me finish my point, then you can actually say. So Zomato also started Blinkit, which is something Swiggy was already doing. So 10 minutes delivery was, तो मतलब 10 minutes was okay, something okay. innovative done by Zomato, but same day delivery was something जो चल रहा था. Blinkit But was innovate not, कुछ तो innovation किया ना, ऐसा तो नहीं है ना जो चल रहा है उसको बस follow किया है. but वो They भी have some ट्रेंड में ही innovation. देखा ना, ट्रेंड में ही तो तो देखा. 10 तो minutes I'm Swiggy not I'm was not also, I'm not saying कि ट्रेंड को फॉलो करोगे तो सक्सेसफुल नहीं होगे. I'm saying कि ट्रेंड को फॉलो करो फिर इनोवेशन करो. अगर इनोवेशन नहीं करोगे तो फिर आप फेल हो जाओगे. राइट. अगर but आप now it is इनोवेट back My to, अगर point, now it is back to. आई Sumit, वांट टू ऐड वन थिंग. अगर आप इनोवेशन करते हो ना तो उसमें भी आप मार्केट ट्रेंड्स देखते हो, लोगों को क्या प्रेफरेंसेस है वो भी ट्रेंड्स में ही आते हैं, राइट? तो इनोवेशन भी ट्रेंड्स को देख के ही होता है. आप अपने आप से कुछ भी नहीं निकाल सकते. आपको पहले वेरीफाई करना होता है कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हो वो सच में है कि नहीं, और वो कैसे प्रूव होता है? ट्रेंड से होता है. and Sumit, my point I is will like, how can disagree you to say that. this? I will No, disagree to no. that. Right? I'll I also mean, disagree. even today, when we go and start talking about STM, for example, most people don't even recognize the problem. Hmm. Mostly, you will hear from all innovators. Before the bridge was built, nobody needed the bridge. When Apple built smartphone, touchscreen smartphone, who needs touchscreen smartphone? Nobody needs ना, but उन्होंने किया. Sumit, prior to Apple's, Samsung was building touchscreen smartphones. The first touchscreen Android smartphone was brought into the market by Samsung. Exactly. प्रतीक सर, आई वुड लाइक टू काउंटर व्हाट यू सेड. सर, Sure, sure. आपने जब Go ahead. एसटीएम इन्वेंट किया तो आपने देखा तो होगा ना, ये ट्रेंड देखा होगा कि मैंने लोग कुछ नहीं देखा. नहीं. तो फैक्ट मतलब मैं सोचता बेसिक हूँ. बिहेवियर तो ऑब्जर्व कुछ किया नहीं होगा स्टडी ना. किया. मैंने सिर्फ अपना बिहेवियर स्टडी किया. मैंने किसी और का बिहेवियर नहीं स्टडी किया. तो सर वो भी तो ट्रेंड ही हो गया ना एक अरे तरीके वो से. कहाँ से ट्रेंड हो गया? क्या? रिया, नाउ यू आर कॉलिंग एनीथिंग. ऐसे तो हर खाना खाना ही होता है, But राइट? sir, let's just say कि you are one of the example जिसका जो timing था ना वो बहुत correct हुआ. क्या हुआ? The timing that you are I coming for uh STM is really great. No, कि, no. no. We've had this discussion in the past. So, हाँ. Innovation is not about timing. Right. Innovation makes its own time. When it happens, it is considered that time as its own time. When Einstein came up with relativity, 300 years had passed since Newton discovered gravity. But in 300 years, nobody figured it out. Einstein figured it out. So he made his own time. There was no time for relativity to be discovered. but we know today a lot of people are looking for algo platforms. People are trying to switch for algo But the platforms. Algo but the platform main is point not is my innovation. right. Pratik Algo sir is not. platform is just, hold on, stop. Okay, sir. Okay. Algo platform is just a mechanism to deliver the value. I'm not claiming that I'm building the first algo platform, right? And it's not the algo platform. If you talk about algo platforms, we don't stand a chance. There are so many algo platforms, we don't stand a chance. If we win this fight, it will only be because we are doing something different. ठीक है, ये तो एसटीएम का डिस्कशन हो गया. Let's come back to the main point. I just couldn't hold back my thoughts on this. But please go ahead. We have a lot of time. Please discuss the whole issue, with a broader audience. Yes. Yeah. Audience can ask questions, please. So my question to both of the team that like uh, I really don't know about the trend. So can you please guys tell me that what the exact trend is for you guys in term of investment, I would say. So because both of you have like given the example of like different time frame only like So commodities की अगर right. You know about for stock market, I'll say momentum trading का मालूम है ना तुम्हें? हाँ right. Momentum trading is a trend following strategy, Okay. right? And this EMA strategy, exponential moving average, simple moving average, these all are trend following strategies. So momentum is something like momentum. It could be in the consolidation market as well. Yeah. So how it is like?
Trend following strategy. Consolidation market. No, but why are we getting into the technicalities of what is the trend? Like, I mean, now we are debating a totally different point. Okay. Right? What is the trend following? The point is whether trend following is better than innovating. Innovation. Okay. Now we can't take individual strategies and start debating on those strategies whether they are trend following or not. We are deviating from the point. Right? Okay. Right. Okay, Riya, one question. Riya is there, right? Yes. Yes. You showed in the second slide about the Great Depression, or there's a graph, or not a graph, you can say a chart. Mm-hmm. Okay. So about Great Depression, about three different companies. Mm-hmm. Okay. Nothing was mentioned in the chat about those companies. Only I was able to see the chart of Great Depression. What was that about, basically? 1 second. What were you about to say in that slide? 1 second. Just let me open the slide. Rohit, can you share your screen? Yeah, this slide. This slide is back. The previous one. Yeah, this one. So you have shown here, and you were talking about 1806 or something. 1906. 1906. So, 1906. So basically, this chart compares the 60-40. I don't know the technicalities, but I just know 60-40, 60% stocks होते हैं, 40% bonds होते हैं, the strategy that a lot of people follow, right? उसके versus the time series momentum, the strategy that the researchers followed, the century of evidence in the century of evidence study, right? तो उनके comparison में the blue one has always given, the blue one is the time series momentum, the study that the researchers did. तो वो हमेशा profitable रहा है during all the crisis, all the major crisis जिसमें market बहुत ज़्यादा गिर गया था. And whereas people who were following this 60-40 portfolio rule, उनको losses हुए थे, major losses. एंड बस एक टाइम जो 1987 स्टॉक मार्केट क्रैश है उसमें दिस स्ट्रैटेजी वाज एट अ लॉस, बट वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था compared to like other strategy. This is one of the charts that these researchers have mentioned in their research paper. So I found this relevant, so I put it here. So what you meant over here, it's a trend following or something? Yes. I'm not able to see anything as trend following in this sense. इसमें बस कंपेयर किया था, स्ट्रैटेजी वाज कॉल्ड द टाइम सीरीज मोमेंटम. ओके, उसमें बेसिकली उन्होंने सिंगल मार्केट जैसे गोल्ड हो गया या फिर अदर एसेट्स हो गए उनको कंपेयर किया था थ्रू आउट हंड्रेड्स ऑफ इयर्स. इसमें ट्रेंड फॉलोइंग बेसिकली सिर्फ क्राइसिस का दिखा रहा है, जो भी पैनिक ऑफ 1907 था, वर्ल्ड वॉर वन, सिर्फ उस टाइम पे ये जो स्ट्रैटेजी है इसने कैसा परफॉर्म किया था, कितने रिटर्न्स दिए थे, सिर्फ उसका है ये. Okay, so Fine. you are saying it is just for let's say September 1906 to November 1907, right? यस यस, जो But नीचे टाइमलाइन मेंशन्ड है ना, इसमें बस अच्छा, वो मेजर क्राइसिस ये के टाइम decades पे का कैसे कैसा हुआ फिर? But बाकी टाइम पे क्या हो? Decade, you are saying the decades ना? You are also written here हाँ, बट across आप many अगर decades सर्च and करोगे asset ना, class. आप अगर हाँ. सर्च करोगे तो उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक वो उनके पास उनके खुद के रिसर्च पेपर में वो पूरा चार्ट नहीं है, उन्होंने बस एक ही चार्ट प्रोवाइड किया था विच आई पुट हियर, राइट? नहीं तो उन्होंने चार्ट पर पुट नहीं होता, जब उन्होंने जो एक्सप्लेन किया होता है ना उससे भी तुम चार्ट बना सकते हो. आई थिंक जो क्या नहीं एक्सप्लेन सॉरी, किया मैं था. उतनी मतलब मैं उतना टेक्निकलिटीज में नहीं घुसी. आई थॉट दिस इज प्रूफ इनफ कि इन एवरी लाइक मेजर क्राइसिस उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है. अदरवाइज Yeah, मोस्ट उनके रिसर्च पेपर में टेक्सचुअल बेसिस पे ही मेंशन्ड right, है right, दैट दे right. observed But that in every decade there was some I positive also read that paper, percentage but I also read this paper. So प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने सिर्फ 60-40 पोर्टफोलियो जो स्ट्रेटेजी इन्होंने एक्सप्लेन किया था उससे ही कंपेयर किया है, बाकी देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, तो उन्होंने कुछ कंपेयर ही नहीं किया था इसको. ओके, बट स्टिल मतलब ये काफी रिनाउंड पेपर है और इससे ये इनकी स्ट्रैटेजी तो एटलीस्ट ट्रेंड फॉलोइंग जो मुझे प्रूव करना है, इट वर्क्स एंड इट गिव्स प्रॉफिट, वो तो प्रूफ हो जाता है ना, तो दैट इज नहीं तो इनफ. प्रूफ कैसे? पॉजिटिव रिटर्न्स दैट डजंट मीन ना कि वो सक्सेसफुल है.
क्यों? प्रॉफिट से ही there is तो a different सक्सेस there is a different strategies और different अगर तुम किसी स्टॉक के या किसी कंपनी की ग्रोथ पे या वैल्यू पे अगर फोकस करते तो इनसे ज्यादा तुम्हें रिटर्न मिलता मोमेंटम स्ट्रेटजी से। बट इसमें I'm just कौन saying, ज्यादा I don't have for data for this, but I'm just saying. पर इसमें तो मुझे सिर्फ इनोवेशन से वो करना है ना, राइट? आई हैव टू कंपेयर इट विद व्हाट यू सेड। बाकी स्ट्रैटेजीज अगर अच्छी चल रही है उसका मतलब ये नहीं है ना कि ये स्ट्रैटेजी नहीं चल रही। और इसमें सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें जो इवन मेजर क्राइसिस में आपको प्रॉफिट दे रहा है, दैट इज माय पॉइंट। बाकी स्ट्रैटेजी कभी कभी किसी टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी, कभी नहीं कर रही होंगी। आई अग्री, Right. Let's say बट that जो doesn't diminish the fact that this strategy works very nicely. okay बस सर 11 मिनट हो गए वैसे ऑडियंस को। सॉरी मेरा म्यूट था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके so Sohel, Can we play the ad, HTML ad? Sure, go ahead. Every trader knows the stress, watching markets rise and fall, wondering if this time you'll finally get it right. But what if trading could feel different? What if you could grow your wealth without anxiety or overthinking? Introducing the stressless trading method powered by the Kosh app, a revolutionary way to generate a steady monthly income with zero stress and zero guesswork. Join the Stressless Trading Method webinar, a session that could change the way you trade. Watch how the Kosh app automates trading, manages risks, and generates consistent income even during market crashes. No prior experience needed. If you want to experience stressless, consistent wealth creation, this is your moment. Join the Stressless Trading Method webinar on Friday at 7 p.m. IST. okay Sohel, are you ready? Okay. Share the screen. मैं शेयर करता हूँ। Sorry for the background noises. okay Okay. So, good evening, everyone. shall we start sir? One second सर स्टार्ट करें। चलो मैं टाइम देखता हूँ, ठीक है सोहेल शुरू करो। So, there are two things. So, first of all, the success should be measured by impact and originality, not by popularity. Sohel, your voice is not that much clear or not loud actually. There is background noise actually. So, see it is मैं not clear. सोहेल आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। Hello. आवाज क्लियर नहीं आ रही है तुम्हारी। इस ईयरफोन लगा रखा, क्या लगा रखा तुमने? क्या हो रहा है? स्टार्ट नहीं हो रहा क्या? वो तो सर वो सोहेल की आवाज नहीं आ रही तो उसको बोला है सही करने को। क्या हो गया सोहेल को? आवाज नहीं आ रही थी सर उसकी। तो डिस्टर्बेंस आ रहा है सर उसके साइड से। तो किसी और को पिकअप करना पड़ेगा। सुमित तू ही पिकअप करना। एक 10 सेकंड वेट करते हैं। सोहेल तुम कर रहे हो या मैं करूं? आवाज आ रही है सुमित मेरी? हाँ भी आ रही है सर, आ रही है। So, yeah, of course, so first of all, success should be measured by impact and originality, not by popularity. बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है यार। Yes, Sumit, sir. you will have to take over. ओके सर। Okay, guys. So second question is, should success be measured by popularity and visibility or by impact and originality? So we are saying
It measured by impact and originality, not by popularity and visibility. So because popularity is like a spotlight, bright but short-lived. Impact is like sunlight, quieter but sustaining. Today we explore why visibility attracts crowds, but only originality creates legacy, especially in financial world. So let's start with this chart. Popularity was this 3 years CAGR return. Here you see four names we all recognize. Sorry, two names, Nika and Paytm. On the x-axis, we have the popularity index based on media mention and Google search trends during their IPOs. And on the y-axis, we have 3 year CAGR return. Now look carefully, the most popular stock, Paytm and Nika, are on the right side with high popularity. But see, where they are vertically, below the zero line. Their return are negative about 28% and negative 21%. On the other hand, SDFC Bank and TCS are on the left with low media hype, yet their return are positive 10% and 3%. What does this tell us? It's simple. Hype fades, fundamental last. In the long run, visibility doesn't build value. Discipline and execution do. This is not just an India story. Globally, too, over 70% of IPO launched in 2021 lost value within 24 months. The more they trended, the faster they fell. Because market eventually price truth, not trend. The most popular gave the worst return, the least visible built real wealth. In behavioral finance, this is attention bias. Investors chase what's visible, not what's valuable. If success was about being most talked about, Paytm would be India's Tesla, but the market says otherwise. Okay, now let's look at the second chart. This one beautifully explained why this happened. The orange curve shows short-term attention, like media buzz or social hype. It shoots up quickly when something new launches. That's the FOMO phase. The green curve, on the other hand, represent long-term earnings, the actual financial performance. It starts slow but keeps rising over time as the company builds real value. So what do we see? There's a huge gap in the early phase. Attention is high, earnings are low. That's the illusion zone where people think success is happening just because everyone's talking about it. But eventually, orange line fades while the green one catches up. That's when true success, measurable, sustainable success begin. Think about Zomato. It was mocked initially after losses, but now after disciplined operation, it's turning profitable. While Paytm, which had more buzz, is still chasing profitability because success built an attention. Because success built on attention collapse fast, but success built on value compound quietly. Okay. Okay, so the third graph, the S curve of innovation, it explains how trends evolve in society. It comes from Edward Rogers' diffusion of innovation theory, a model used globally in economics and technology adoption. The curve shows how new ideas or products spread. It starts with innovators, the first 2.5% who try new things, then come early adopters who brings in the first wave of excitement. That's where the trend becomes visible and where the hype usually peaks. But here's the twist. Between early adopters and the early majority, there is a dangerous gap. This is where most hyped products and companies fail. They can't convert excitement into long-term innovation. The companies that cross the chasm, like Apple, TCS, or Infosys, don't rely on short-term trends. They rely on innovation, quality, and trust. Things that take time but endures decades. Okay. Okay, this is if you think about it, investors and audience behave the same way. Sumit, time up. Yeah. Okay, sir.
So second question of the debate is, should success be measured by popularity and visibility or impact and originality? So let's talk about the incredible power of popularity. My first point is the meme stock frenzy. You might remember the story of GameStop in early 2001. A group of online traders on Reddit turned a struggling video game store into a Wall Street battleground. In less than a month, the stock exploded from $18 to $483. This wasn't on company's profit, but purely on social media's buzz. A University of Chicago study confirmed this, showing that stocks with high social media attention saw return over 40%. The lesson: popularity itself is a tradable and profitable signal. My next slide is, now take a look at Tesla. For years, its stock value was higher than all other car companies combined, even with the minimal profits. Why? Because its popularity and visionary story allowed it to raise 5 billion in 2020 by simply selling shares. This gave Tesla cheap fuel for its massive growth. Popularity provided a real strategic advantage, a lower cost of capital. Finally, even Google search data proves this. Algorithm now track how often people search for a stock. A spike in search of GME was reliable predator of a price jump. Visibility has become a quantifiable data point used by professional funds. So, in the short term, popularity isn't just hype, it's a powerful and predictable market force. Now, let's shift to the long term game, impact, and originality. My first example is Amazon. If you invested $1,000 in its 1997 IPO, it would be worth over 1.8 million today. This didn't happen because of a short term hype. It happened because Amazon fundamentally changed how we shop, and with AWS, how the world uses computing. This proves the old investing principle. The market is a voting machine in the short run, but a waiting machine in the long run. Eventually, the stock prices reflect the true economic impact of the business. The dot-com bubble is a perfect lesson here. Countless popular websites like pets.com collapsed because but they had the visibility but no real impact. Amazon stocks also fall over 90%, but it survived because its original business model had a clear path to massive long-term impact. The crash acted as neutral selection, weeding out popularity in favor of genuine impact. And then there was a Warren Buffett on Coca-Cola. He invested $1.3 billion in 1988. Today, Coke pays him over $700 million dividend each year. That's more than half his initial investment back. Every single year, this success isn't from a trendy narrative, it's from Coke immense brand pop impact and global distribution. What we call an economic moat, true financial success for long-term investors is built on this durable cash flow generates thing impacts. Rohit, Yes, okay, done.
Yes, I'm done. Okay. Yeah, you can unshare this screen. So, shall we start for the rebuttal? No. I didn't. Yes, start for the rebuttal. Okay. Yes. So, Rohit, you said Tesla was successful because of popularity, right? Rohit? Yes. Yes. But do you really think? Don't you really think it? Don't you really think it is blend of popularity and originality? Initially, if you can, if you will, sorry, if you see in 2003 to 2015, I think जो भी electric vehicle थे, they basically Tesla successful because of the originality in initial stage, right? After 2015 थोड़ा सा पॉपुलैरिटी हो गया, तब जाके वो ज्यादा सक्सेस हो गए, बट इनिशियली तो वो अपने ओरिजिनलिटी की वजह से ही फेमस हुए ना, सक्सेस हुए थे. डोंट यू थिंक? Continue. Tesla based. Can you please repeat once more? मैं ये कह रहा हूँ कि जब 2003 में टेस्ला स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जी. और 2003 से 2015 के बीच में जब वो सक्सेसफुल हो गया था, इतने अपने 12 साल में, स्टार्टिंग के 12 साल में जब सक्सेसफुल हुआ था वो, तो वो अपने ओरिजिनलिटी की वजह से सक्सेसफुल हुआ था, ना कि पॉपुलैरिटी की वजह से, राइट? आफ्टर 2015 जब उसका पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गया, तब वो और ज्यादा सक्सेसफुल हो गया बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी, बट इनिशियल फेज में वो ओरिजिनलिटी की वजह से सक्सेसफुल हुआ था. टेस्ला को ट्रेंड का फेस मिला था, इसीलिए वो उस टाइम पे जो कौन सा ट्रेंड मिला था उसको? उस टाइम कौन सा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड चल रहा था जो उसने ट्रेंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना दिया तो सक्सेसफुल हो गया? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो आई थिंक 1890s में भी, 1890 में उस टाइम पे सबसे पहले बने थे. हम्म. सुमित, टेस्ला ने सबसे पहले यूनिक ट्रेंड लाया था इलेक्ट्रिक लाके. तो ट्रेंड नहीं लाया था उसने, इनोवेट किया था ना. ट्रेंड बनाया होगा, ट्रेंड बनाया था, ट्रेंड को फॉलो नहीं किया था. सी यू आर सेइंग ट्रेंड लाया था, दैट मीन्स उसने ट्रेंड बनाया था, ट्रेंड फॉलो नहीं किया उसने. सुमित, मतलब टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड लाया था, फिर वो हाँ ट्रेंड ठीक. बन गया. बट आई बेसिकली एम टोटली. टेस्ला के पहले भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, हाँ, बट दोज आर नॉट दैट मच पॉपुलर. कब थे? आप टेस्ला के पहले 1890s में सबसे, मैं बताता हूँ 1890s में, 1890 में सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बने थे. डू यू नो अबाउट इट? तो मतलब 110 साल में, 113 सालों में, 113 सालों में किसी ने फॉलो नहीं कर पाया ट्रेंड. 113 साल बाद टेस्ला आ गया, उसने फॉलो किया. टाइम अप हुआ है. Let the rebuttal come from the for team. I just want to clarify something about rebuttals. Rebuttal does not mean that you have to engage the other side in a conversation. Rebuttal time is your time. You are supposed to rebut the points the other team has already made. Please don't try it. I mean, it is not necessary that you have to engage the other team into a conversation. By engaging them into a conversation, you are giving them your time. Okay, so I think Conscious of that, yeah. right. It means I have to say कि मैंने क्या points agree कर Right. रहा हूँ और नहीं कर रहा हूँ. उन्होंने जो बोलना था 5 मिनट में बोल दिया, अभी ठीक है. तुमको उसको रिबट करना है. ठीक है. It is not that you have to engage them in a conversation. Conversation के लिए audience जब आएंगे तब होगा conversation. ठीक है. ठीक. Okay. Okay. Go ahead, 40. Yeah. I have a Sure. question. So, No, you need to put your points. मेरे कुछ नहीं, points उसको जो बोलना है, she अच्छा. knows what she is doing. I was just Okay, okay. giving you a hint about what you should be doing. That's all. Okay. so if popularity doesn't matter, then why brands like Apple and Nike, जिनकी cult like following है, like once you go iOS, you can't go back to Android. Again. No, I'm not finished with my question. Okay. Finish, Yeah. please. So my question is कि ऐसी cult like following है, right? And then there's Pepsi and Coca-Cola who are competitors, and there are people who prefer Pepsi over Coca-Cola, and उसपे बहुत debates भी होते हैं लोगों के, right? तो
I feel like लोगों का जो sentiment होता है, which is directly related popularity and लोगों का जो sentiment होता है, that influences a brand's performance over time, right? So what do you have to say to that? ओके Why मैं एक have एग्जांपल देता हूँ, मैं एक yeah एग्जांपल तुम्हें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड देता हूँ उसमें, ठीक है। लेट्स से कोई भी नया स्ट्रेटजी बनता है, ठीक है, लाइक मोमेंटम स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी प्रिडिक्टिव स्ट्रेटजी की। तो इनिशियली जब उसे कम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तब वो सक्सेसफुल होता है, राइट, क्योंकि उसे इनोवेट किया गया है उसी टाइम, अगले 3 से 4 महीने वो चलता है, राइट, क्योंकि उसे इनोवेट किया गया था, ठीक है। उसके बाद वो फेल हो जाता है, करेक्ट। अभी तुम बोल रहे हो कि एप्पल एप्पल की कल्ट फॉलोइंग है, ठीक है, पॉपुलैरिटी है, इस वजह से वो सक्सेसफुल है। बट इनिशियली एप्पल ने ही स्मार्टफोन्स का ट्रेंड इनोवेट किया था, राइट। but it is not about innovation, it's about मतलब ओरिजिनलिटी। popularity based उनका because of their popularity and because they are well नो नो loved नो, by people और Apple सी सी, loyal हैं created the smartphone इसीलिए innovation. Smartphone अवर, innovation was created by Samsung. सॉरी, Sumit, Apple doesn't create innovated the smartphone. Smartphone innovation was done by Samsung, which is first Android smartphone was ठीक है ठीक है ठीक है innovated by Samsung. ठीक है ठीक है ठीक है, उसने iOS डेवलप किया, ट्रेंड ट्रेंड फॉलो किया, उसके बाद इनोवेट कर लिया, ठीक है। इनोवेट किया ना, अगर वो सेम सैमसंग जैसे ही ट्रेंड को फॉलो करता और एंड्रॉइड पे ही फोकस करता, तो आई डोंट थिंक कि एप्पल सक्सेसफुल होता, राइट। उसने um, इनोवेट किया ना। और अभी हम बात कर रहे हैं पॉपुलैरिटी वर्सेस ओरिजिनलिटी की, ओके। सो द मेन पॉइंट कि कोई भी कंपनी, अगर कंपनीज की बात कर, अभी हम कर रहे हैं अगर, तो कंपनी इनिशियली जो सक्सेस हो रही है वो अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से हो रही है सबसे ज्यादा, या ओरिजिनलिटी की वजह से। अभी तो आप करंटली जो, ठीक है, आप हाँ, एप्पल का एग्जांपल छोड़ दो, आप नाइकी का एग्जांपल ले लो। उन्होंने तो कुछ खास इनोवेशन नहीं किया है, पहले भी जूते बनाते थे, अभी भी जूते ही बना रहे हैं, है ना? तो उस पे बात करते हैं। नाइकी ने इनोवेशन नहीं किया। हाँ आई तो आई उस आई आई डोंट थिंक कि नाइकी इनोवेट नहीं करता है, बट मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं किया है नाइकी के बारे में, बट नीचे करके ऊपर क्यों ला रहे हैं? हम इनोवेशन में वो ज्यादा से ज्यादा अपने शूज के डिजाइन चेंज कर सकते हैं या मार्केटिंग में ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं, बट मार्केटिंग अपार्ट फ्रॉम स्पेंड, दैट बट शूज में तो आई थिंक कंफर्ट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन शूज ना। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट सर टाइम खत्म हो गया। अभी ऑडियंस को 10 मिनट देते हैं। Rohit, okay. Your third point, you spoke about a bubble, Amazon bubble. .com Spoke bubble. of the bubble, okay, डॉट कॉम .com बोलो। bubble. How did that come into picture? जावेद म्यूट कर लो अपना प्लीज। Hello. Huh. So Rohit, you spoke about the third point, which is the bubble. Okay, and Amazon was during that bubble period. How did that point come into picture for impact and originality? What logic it had? Hello, सुनाई दे रहा I है? think हाँ. when I researched about it, this exemplifies Benjamin Graham principle that while market is a voting machine in the short run, it is a waiting machine in the long run. So रोहित, यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज फिटिंग मशीन। Rohit, G. so means I just want to understand how was the logic connected to impact and originality? Okay, because see, first thing is popularity versus and visibility. Okay, which the opposite team spoke about. Okay, and you're not talking about impact and originality. So how with so you spoke about Tesla starting and about this thing. There were 2 points you made starting. How did the .com bubble is connected to impact and originality? The crash was natural selection. Even the filtered out companies based out on popularities from those built in the genuine and original impact when the .com bubble has happened. I didn't get you. Adrian, as I know, like the dot-com bubble was highly original because uh, impact and originality की बात करें अगर हम तो Mhm. that was a mixed of eBay and Yahoo and all.
तो उसके वजह से ये एग्जांपल लिया गया है कि डॉट कॉम बबल जो है वो हाईली ओरिजिनल एंड इंट्रोड्यूस जो हुआ था वो कम्प्लीटली न्यू था इंटरनेट बेस्ड को बिजनेस आइडियाज लाइक अगेन अमेजोन ईबे एंड याहू। तो वो इम्पैक्ट वाज मिस्ड ऑफ ओरिजिनलिटी एंड लाइक दिस वन Dot. पॉपुलैरिटी। Okay. A dot-com bubble was a result of something which did not go right, right? Because many people invested in the technology stocks, and because something did not go right, so that thing was a occurrence of that thing, correct? हम्म So what comes into impact originality? uh, Speak on a logic point of view. okay, so impact and law, it was a huge, I think, short-term losses, right? Hmm. Hmm. But we can say also na, that transformed commerce and technology also after that, leaving a lasting like positive effect. That is also one thing that we should consider. Mhm. Okay. It transformed like commerce and technology. Mhm. So here the impact comes. Okay. Have you done, Yes. Adrian? Yeah, done. You say Okay. Nishant. Yeah. So my question to Sumit, see, nowadays it is a general example I'm taking this. Nowadays, if we talk about the e-commerce platform out there for shopping, online shopping, and all that, so can I consider the two biggest of in India? First is the Amazon, and the second is the like Flipkart, right? Agree? मैं So समझा नहीं क्या बोला, सॉरी. in India, basically there are two, one of the renowned e-commerce platform हाँ, for okay. online shopping. Amazon and the Flipkart, right? Flipkart, okay. So can I say that due to popularity, we are choosing Amazon or Flipkart? Can we say that there I is a think no. We are choosing Amazon and Flipkart because of originality, right? क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे अभी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, बट हम उनको यूज नहीं करते ना. इनिशियली Amazon और Flipkart ही आया था बिकॉज वी ट्रस्ट ऑन देम, राइट. तो उनका जो इम्पैक्ट है, ओरिजिनलिटी का इम्पैक्ट, वो मार्केट में है. इम्पैक्ट ओरिजिनलिटी का इम्पैक्ट है बेसिकली, इस वजह से हम नहीं, उसको ही. बट उसके साथ साथ जैसे मिंत्रा है, जियो है और रिलायंस रिटेल है, मतलब हाँ देर हाँ आर टू मेनी प्लेटफॉर्म, बट yeah. डोंट यू थिंक सो कि ये पॉपुलैरिटी की वजह से ही लोग इस पे जाते हैं, या फिर उससे पॉपुलैरिटी नहीं है बिल्कुल, उसका रीजन ये नहीं है? See, I'm not saying कि there is Yes, there is a hello. yeah, Sumit, go ahead. हाँ, I'm not saying कि पॉपुलैरिटी का बिल्कुल रोल नहीं है, ठीक है. मैंने ये ओके, कभी नहीं बोला. मैं अच्छा ये बोल रहा हूँ कि जो सक्सेस होती है वो सक्सेस मेनली ओरिजिनलिटी के बेसिस पे ही आता है, ठीक है. और ओरिजिनलिटी क्या होती है? ओरिजिनलिटी होती है कि अगर तुमने किसी ट्रेंड को फॉलो किया और उसको इनोवेट कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो ओरिजिनलिटी. ओके. तो यू आर अग्रीइंग कि ओरिजिनल होने के लिए भी आपको ट्रेंड फॉलो करना पड़ता है, राइट सुमित? नो नो, I'm not saying this. No, I'm not saying this. अब लेट्स See, अगेन हमें would you एग्जांपल. क्या agree बोल रहा that है? Su- What we Sumit, are agreeing Sumit, to. I have one question, Sumit. Renault pen and Parker pen is one of the famous pen that तो वो तो ओरिजिनली जो है, बट उनने तो ऐसा कुछ इनोवेशन किया नहीं जो बार बार आप इनोवेशन की बात कर रहे हैं. पार्कर पेन एंड रेनॉल्ट पेन, सी मैं टू अगेन बता पेन. रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हर सेक्टर में, जैसे अभी नाइकी की बात हुई थी, अब पेन्स की बात हो रही है, हर जगह हाँ कुछ ना कुछ हाँ इनोवेशन होती है. हमने उसके बारे में रिसर्च नहीं किया. अभी हम सी पेन्स में भी बहुत ज्यादा इनोवेशन होती है, रिसर्च होती है, R&D होता है, राइट. बट सुमित अगर एक amazon मिनट, एक एक मिनट, एक मिनट, ओवरऑल एक मिनट, एक मिनट. Everything is becoming about Sum. This is not fair. Let others also participate. मेरे को भी कुछ बोलना है. श्योर सर. शायद आपको भी कुछ बोलना होगा. Guys, let us not just make it about Sumit. जावेद, जावेद जावेद म्यूट कर लो. कैन यू प्लीज म्यूट? हाँ, Basically, the point. I mean, again, I don't want to. I get a feeling मैं जब बोलता हूँ तो I become too forceful, but I just want to put a hint out there that every trend is preceded by an innovation, and every product differentiates itself by through some innovation, even to find a floor for itself in a trend. Even in a trend, you have to differentiate yourself for people to want to use you. If you do the same thing that everybody else does,
people will look for the cheapest version. All that we Exactly. have to compete with is price. Unless you do some innovation, you cannot compete on anything else but price. Just my thought. Right. मैत्री तुम्हारा कोई थॉट है क्या इस पे? Yeah, I always believe that following trends gives you only limited success. But if you innovate, then your success becomes long lasting, and like Sumit said, like it will be like for a long haul. Mm. That is what is important, because we just have to go on innovating. Unless and until we do it, after like 4 5, like Flipkart and Amazon will be successful, the 10th one will fail like anything. It will bomb. It will only be successful if it innovates. That is my thought. I mean, let me take a slightly different example that all of us must have gone through. You know, we always see that there are toppers that keep topping the class again and again and again and again. Right? The trend is clear. The second guy, the third guy, the fourth guy, they all know what the trend is. But they just can't keep up because the topper is always innovating. He's doing something different every time. At least that's what I have observed in the toppers that I have worked with. And just a different angle to the question. Yeah. राइट सेम थिंग जो आप अपने डजन डायमंड के लिए भी बोलते हो, हमारी जो एक स्ट्रेटेजी है एसटीएम, अगर वो कोई हमें कॉपी कर भी लेता है, कोई नई कंपनी आती है जो एसटीएम यूज कर रही है, अगर उसके बाद हम इनोवेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम पीछे रह जाएंगे. हम इनोवेट करेंगे इसलिए हम आगे जाएंगे. राइट. एग्जैक्टली. ठीक है. आई मीन द पॉइंट इज दिस डिबेट इज गेटिंग अ लिटिल टू पर्सनल. हम कुछ ज्यादा ही डीडी के बारे में बात कर रहे हैं. हमको ओपन रखना चाहिए थोड़ा. ठीक. So, okay. Audience, any other questions? अभी टाइम है अपने पास. 30 सेकंड और है. कोई कुछ बोलना चाहे तो. आकिब है क्या ऑडियंस में? मैंने आकिब की आवाज नहीं सुनी. है ना, बोला था. मैं किया एड्रेन का आंसर किया हूँ सर. अच्छा अच्छा अच्छा. ठीक. हाँ. यस. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन पे मूव करें. ओके. प्रेजेंट कर दो. चलो स्टार्ट करूँ मैं सर? हाँ करो. ओके. Okay, let's start. Okay, so the third question is trend following sustainable in the long term or just a short term gain? So we are opposing the motion. So we argue that trend following gives only short term gains and fails to sustain in the long term. So trends are fascinating. They make you feel smart when you are early and invincible when you are winning. But here's the secret nobody likes to admit. Most trends don't create wealth, they create noise. In the stock market, trend following is like catching a wave, thrilling for a few seconds, but you can't surf forever. Eventually, the wave crashes and it takes you with it. So let's explore 3 facts with real market data that reveal why trend following may make headlines but not portfolios. Okay. So this first chart compares momentum strategies which follows the trend against value-based investing, which focus on fundamentals. Look at those orange bars. These represent trend following returns during 3 major crash periods, 2009, 2018, and 2022. Each time, momentum collapsed, losing 30 to 40%. While value stock, shown in teal, actually rose modestly. So the trend works until it doesn't, because trends don't forecast change; they amplify the past. And when the market turns, trend followers are the last to leave the party. So AQR Capital, one of the largest quant firm, actually called this the momentum crash phenomena. Every decade, the same story repeats: a quick sprint followed by a hard fall. If trend following were truly sustainable, we would see consistency. But in reality, it's a roller coaster, thrilling high, painful loss. Okay, 1 second.
Okay, let's bring this closer to our country. Remember the hype around India's new age IPOs, Paytm, Zomato, and Nykaa? So this chart tracks Google search interest at their IPO peaks, the orange bars, and compares it to their return 6 months later, the teal bar. When attention was 100 at 100, absolute peak returns fell as much as negative 60% in just half a year, because by the time everyone's talking about a trend, it's already over. This isn't just market data, it's behavioral data. Psychologists call it the attention decay effect, as I told it before. Once curiosity peak, performance fades. In finance, it's called crowding risk. When too many people buy the same stock, it loses its edge. So same stock say, I mean same strategy followed. Okay? The moment something become popular, it stops being profitable. So trend following doesn't fail because of bad math, it fails because of human behavior also. Okay, so now take a look at this heat map. Each row represents a decade and each column a market factor: momentum, value, quality, and growth. Notice how the colors shift. In the 2000, momentum was bright green, top performer. In 2010, it turned orange, slightly underperformed badly. And in the 2020, momentum was negative 7%, but others gave positive returns. No strategy, not even trend following, stay the hero forever. The market rotates, innovations, regulations, macro shocks. Everything changes the rules. In fact, since 2020, AI, energy, and EVs stocks have dominated. But history says that even they will cool off. Every trend has an expiry date. So now, this is a long-term versus short-term performance, the market gravity law. What rockets up on attention tends to fall back to the fair value. What compounds on fundamental tends to stay up. Look at the table. Short term, the trend following bucket shows a flashy 15% pop over 3 to 6 months, but stretch the horizon to a 5-year CAGR and it collapsed to 1.5% with a 20 seconds left. Okay, with 35% max drawdown. That's headline succeed without staying power. Now compare the value investing. It really trends on social media. Short term, it's a steady 5%, but over 5 years, it compounds to 9.2%, and the deepest fall in the period is contained at 12%. It's Time slower up. at the start. Time up. Okay, so okay. Go ahead, team. Our, yes, sir. Our third question is trend following sustainable in long term or does it only provide short term gains? I rise today to strongly support the motion that trend following is indeed sustainable in the long term, not just a short term trading technique. Let's begin with the basics. Trend following means identifying the direction in which the market is moving upward or downward and taking positions accordingly. In simpler words, it means riding the wave instead of swimming against it. Now, some urge that the trends are temporary and cannot ensure long term success. But the truth is, financial markets are built on long term trends, bull market, bear market, and cyclical shifts that last for months or even years. And the reason these trends exist is because human behavior never changes. Greed, fear, and herd mentality are timeless. And trend following strategies capitalize precisely on these emotions. Let's take a look at some data, real worldwide evidence.
In the 1980s, a famous trader named Richard Dennis trained a group of beginners, the turtle traders, to follow simple trend-based rules. Their results were astonishing. With a starting capital of $400,000, they made over 175 million in just 5 years. This was not luck or timing. It was proof that disciplined trend following work consistently across time. Academic research backs this up. A study by Andrew Lowe, 2005, analyzed 30 years of data across future commodities and stock indices. It found that trend following strategies earned 15 to 20% annualized returns, outperforming buy and hold investing. Clearly, trend following can generate sustainable long term performance when applied systematically. Now let's come to recent example after COVID-19 pandemic in 2020. Global market experienced the powerful bull trend by technology stock. The Nasdaq 100 index rose by over 40% in a single year, and investors who identified this trend early made massive gains. Similarly, during the 2008 global financial crisis, trend followers who shorted financial stocks protected their portfolios and even profited while others faced heavy losses. This proves one thing: whether in times of euphoria, panic, trend following adapt, it doesn't rely on prediction, it relies on observation, discipline, and timing. Critics claim that trend following fails in sideways or volatile markets. That's true. No strategy is perfect, but smart investors use risk management tools, stop loss orders, and diversification to minimize their losses. In fact, by combining trend following with other methods like value investing or mean reversion, traders can make it sustainable across all marketplaces. Even today, competitive funds and hedge funds around the world rely heavily on trend following algorithms. Bonds like Man AHL and Winston Capital manage billions of dollars purely on trend based models and have done so successfully for decades. Following is not sustainable, these institutions wouldn't still be thriving. So, what makes trend following timeless? It's not dependent on luck or prediction, it's based on market structure, human psychology. Both of which are constant. Market may change from physical trading tools first to digital screens, from manual analysis to artificial intelligence, but the rhythm of trends remains the same. To conclude, the trend following is not a short term, it is a proven data backed and adaptive strategy that has stood the best of time. Has survived recession bubbles, technology revolutions, and policy changes. As long as the market continue to reflect human emotions and economic cycles, trend following will remain sustainable in the long term. Thank you. Okay, guys, time up. Product development team, go ahead and rebut. Okay. So Rohit, you said कि इंडिकेटर्स का यूज करके मोमेंटम स्ट्रेटजीज का पता लगाते हैं कि फेल होने वाली है या सक्सेस होने वाली है, राइट? तो और तुमने बोला वो इंडिकेटर्स मोर देन 50% सक्सेसफुल होते हैं, जिससे मैं एग्री नहीं करता हूँ बिल्कुल। कोई भी इंडिकेटर्स इतना मोर देन 50% सक्सेसफुल नहीं होता है। एंड सेकेंड थिंग, यू सेड मोमेंटम स्ट्रेटजीज यानी कि ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड टाइमिंग, नॉट ऑन प्रेडिक्शन। आई डोंट थिंक, क्योंकि इंडिकेटर्स तो सारे प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे मोमेंटम क्या होने वाला है, तो ये तो प्रेडिक्शन पे ही बेस्ड है। तीसरी बात, तुमने बोला कि शॉर्ट टर्म में हाईली प्रॉफिटेबल होते हैं। ओके, आई एम एग्री विद इट, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल होते हैं, मैंने भी बोला ये। बट लॉन्ग टर्म में मैंने बोला कि ये प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है। सेम चीज तुमने भी अपनी लास्ट स्लाइड में बोली है कि लॉन्ग टर्म में
ये सक्सेसफुल नहीं होते हैं, अंडर परफॉर्म करते हैं, बिकॉज मार्केट साइडवेज हो जाता है, वोलेटाइल हो जाता है, तो ये अंडर परफॉर्म करते हैं। तो ये तो तुमने खुद ही बोल दिया कि लॉन्ग टर्म में ये सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ओके, दैट्स इट सर। जो लास्ट स्लाइड में मैंने बोला कि आई स्ट्रांगली बिलीव ट्रेंड फॉलोइंग इज सस्टेनेबल इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, इन शॉर्ट टर्म द ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी जो होती है विच आर इफेक्टिव इन मार्केट एक्सपीरियंस क्लियरली डिफाइंस, बट फॉर लाइक हम फॉर एग्जांपल अगर मूविंग एवरेज हम ले ले तो 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज ओवर अ पीरियड होता है, बट इसमें शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट भी होता है वो शॉर्ट टर्म में ज्यादा लॉस भी होता नहीं है इन नहीं 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 कंपैरिजन नहीं टू नहीं लॉन्ग नहीं, टर्म। तुमने ये स्टेटमेंट बोला है ना कि trend following strategies are underperformed in long term because market turns to sideways and volatile, right? What does that mean? ये तुमने बोला भी है और तुम्हारे उसमें लिखा भी है, ठीक है, तुम्हारे स्लाइड में ये एक पैरा में लिखा हुआ भी था। तुम खुद मेरी बात से एग्री कर रहे हो, तुम खुद बोल रहे हो कि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज अंडर परफॉर्म हो जाती हैं, तो पॉइंट ही नहीं आगे। 25 कभी के 35 सेकंड और बाकी हैं, बताओ खत्म रोहित। करिए। सुमित जो हाँ सुमित जो इन कंक्लूजन जो मैंने बोला है हाँ कि हाँ, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रिक्वायर्स कंटिन्यू अडॉप्शन, डाइवर्सिफिकेशन और सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट। इसमें साइडवेज वाली चीज तो मैंने बोली नहीं है। अरे तुमने लिखा भी है यार, कैसी बात कर रहे हो? वहां पे लिखा है तुम्हारी स्लाइड में, जाके देखो उसको। चलो फॉर टीम ठीक है, रिपर। चलो। या ओके ओके, रोहित यू कैन आस्क द क्वेश्चन। रोहित या रिया, प्लीज गो अहेड एंड रीबट। गाइस तुम लोग हो या नहीं हो? Sir, I'm there. I have no questions. Rohit must have prepared a few. अच्छा अच्छा, गो Points. अहेड। Yes, sir. रोहित, रोहित, रोहित के भी क्वेश्चन नहीं है? रोहित, शुड वी मूव ऑन? ठीक है, ऑडियंस का टाइम स्टार्ट करते हैं। सर लॉन्ग टर्म में सॉरी मेरा कॉल आ रहा था इसलिए आवाज नहीं आ हाँ ठीक है रही ठीक है, सॉरी बोलो सर। रोहित। हाँ तो पूछ लॉन्ग टर्म में कैसे ट्रेंड फॉलोइंग रहेगा सुमित? नहीं, मैं समझा नहीं, क्या क्या कैसे नहीं रहेगा ट्रेंड? मैं तो बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड फॉलोइंग सक्सेसफुल है ही नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में ट्रेंड फॉलोइंग जो आप मुझे बोल रहे हो ये हाँ शॉर्ट हाँ, टर्म में फॉर 50 डेज, 100 डेज ही रहेगा, बट अगर मैं लॉन्ग टर्म में बोल रहा हूँ आपको कि लॉन्ग टर्म में तो ट्रेंड फॉलोइंग रहेगा, कैसे नहीं रहेगा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में ट्रेंड फॉलोइंग कैसे नहीं रहेगा? हाँ क्या मतलब, क्या अंडर परफॉर्म कैसे करेगा, तुम ये कह रहे हो ना? लॉन्ग टर्म में ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज कैसे अंडर परफॉर्म करती हैं, ये तुम्हारा क्वेश्चन है? हेलो, कैन यू प्लीज हाँ रिपीट? रोहित, लॉन्ग टर्म में सुमित ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज कैसे अंडर परफॉर्म करती हैं, ये तुम्हारा क्वेश्चन है ना? हाँ बट ये तो तुम खुद बोल रहे हो कि लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटजीज, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी अंडर परफॉर्म करती है, तो फिर ये क्वेश्चन तुम मुझसे कैसे पूछ सकते हो? मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज परफॉर्म करती है और यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। आप आउट बोल रहे हो कि परफॉर्म, नहीं होती करती है, तो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं तुम आपसे क्या, एक सेकंड, तुमने बोला आउट परफॉर्म करती हैं, राइट? हेलो। हाँ बट हाँ तुम अपनी प्रेजेंटेशन में तो बोल रहे हो कि अंडर परफॉर्म करती हैं, ये क्या बात हुई? मैं लॉन्ग टर्म में जो नो नो, तुमने मुझे परफॉर्म सिर्फ ये बात बताओ, तुमने जो लास्ट स्लाइड में कंक्लूजन में बोला है कि इन द लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज
are underperform because the market turns to sideways and volatile. ये बात बोली है ना तुमने, ये बोली है ना बात तुमने, ये हाँ, स्टेटमेंट बोला है इसमें तुमने। सुमित मैं एग्री करता हूँ कि लॉन्ग टर्म हाँ में ट्रेंड फॉलो नहीं हो सकता है काफी टाइम तक। हाँ ठीक है बस, दैट इज द थिंग। तो ठीक है बस फिर मतलब क्या है क्वेश्चन, मेन मेन ऑडि क्वेश्चन तो यही था ना हमारा। ऑडियंस का टाइम शुरू हो गया क्या? हाँ मैम बोल सकते हैं आप। नहीं नहीं, अभी ओके नहीं शुरू हुआ, अभी नहीं अभी नहीं शुरू हुआ, हुआ। ओके अभी नहीं। अभी बटल चल रहा है। हम्म, तो देखो रोहित, जो तुमने बोला है मैं सुमित उसको ही बोल रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ सुमित लॉन्ग टर्म में जो है ट्रेंड फॉलोइंग वो सस्टेन करती है, ये रोहित बोलना चाह रहा है। बट उसने प्रेजेंटेशन में तो बोला कि नहीं करती है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, तुम बोल रहे हो ठीक है, प्रेजेंटेशन मैं में नहीं कह कहा, रहा हूँ कि तुमने। प्रेजेंटेशन में नहीं है, ऐसा तो कोई स्लाइड नहीं अरे है। यार चेक करो यार तुम। रोहित जस्ट शेयर दैट स्लाइड। Can I add on this presentation में specifically mention किया गया है कि जब market sideways होता है या consolidate करता है, so you know that in these two terms which are being used when there is no volume in the market, सी ये in यहाँ क्या है। that चलो, situation it doesn't we are work. done with the rebuttal. We are starting with the audience. ओके मैं कुछ ऐसे आई जस्ट वांट टू say something about trends. You know, some things become trends and they are always trending. Certain things, like I don't want to give business examples, but with respect to, see, if you think about general practitioners, they will always remain trending. That is a that is something which will never go out of practice. लेकिन इनोवेशन चलता रहेगा, फिर भी वो कभी खत्म नहीं होगा. देर आर नंबर ऑफ ब्रांड्स ऑल्सो इन बिजनेसेस, जैसे कि लिवाइज की जो जीन्स है, दे हैव इनोवेटेड फॉर श्योर, बट इट हैज ऑफ नेवर कोर्स। गॉन आउट ऑफ वोग. जीन्स कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाती है. सो सर्टन थिंग्स आर लैंडमार्क एंड दे आर ऑलवेज ट्रेंडिंग. नॉट ओनली आर दे ऑलवेज ट्रेंडिंग, दे विल ट्रेंड again and again after a few years. Yes, Some सी styles, yes, some exactly, trends. exactly, ma'am, exactly, madam. The same ओके example I given for pain, that Parker and Renault pen, and Pratik sir also told that कि एक particular step में और एक particular thing के लिए ही trend follow होता है. हाँ Innovation राइट। हर जगह काम नहीं है, हर जगह innovation जरूरी नहीं है, नहीं, इसकी वजह से ही trend. इनोवेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए तो तुम ट्रेंड को फॉलो करोगे, 6 से 10 महीने 12 महीने तुम्हें सक्सेस मिलेगा, बट उसके बाद अगर तुमने अपने उस ट्रेंड में इनोवेट नहीं किया तो फिर तुम फेल हो जाओगे। I have to add लेकिन something to सुमित, मुझे this. ये कहना है तुम्हें कि हम्म, Same, जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया जनरल प्रैक्टिशनर्स का, जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया जीन्स का, या फिर काफी सारी चीजों का, वो कभी भी yes, आउट yes, ऑफ ट्रेंड जाते ही नहीं है ओके ना, ओके yes, विदाउट yes, इनोवेटिंग. परफेक्ट परफेक्ट exactly, परफेक्ट परफेक्ट। exactly. I लेट मी want से। to add to this. तो काफ़ी सारी इंडस्ट्री, यूटेंसिल इंडस्ट्री हो गई या फिर पूजा इंडस्ट्री हो गई, तो वो तो मतलब उसमें तो कोई इनोवेशन होता ही नहीं है, राइट? यूटेंसिल्स जैसे थे वैसे पहले से चले आ रहे हैं. इवन पूजा इंडस्ट्री, अगरबत्ती, मैच बॉक्स, कुछ भी ले लो आप एग्जाम्पल, तो उसमें तो कुछ खास इनोवेशन होता नहीं है, बट दे आर स्टिल Even an ट्रेंडिंग इन. alcohol industry. सी यस. Yeah, alcohol industry. वो काफ़ी सारे बोरिंग इंडस्ट्रीज हैं जिस पे ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते, बट ये सब तो कब से चले आ रहे हैं. देयर हैजंट बीन राइट और many तो innovations in that. सो लेट्स से अल्कोहल, jeans, and what Riya said. I don't. What do you said, Riya? I said utensils यूटेंसिल industry हो यूटेंसिल गई, हाँ। पूजा तो पूजा इंडस्ट्री हो ओके गई. फाइन, ठीक है, ट्रेंड फॉलो करते हैं ये, अल्कोहल करता है, यूटेंसिल्स करते हैं, जीन्स फॉलो करता है, ठीक है। अगर हम बात करें, ट्रेंड ट्रेंड फॉलो कर रहा है, उस ट्रेंड में कोई भी अगर अपना नया बिजनेस चालू करेगा, लेट्स से अल्कोहल, यूटेंसिल या जीन्स में, तो वो सक्सेसफुल होगा। ओके, हाँ. यू दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, या आई एम एग्री विद इट। बट अगर लेट्स से जीन्स, अगर जीन्स जो बेसिक जीन्स है, लेट्स से लिवाइस ने, पीटर इंग्लैंड ने, इन्होंने जीन्स बनाना बंद कर दिया, आपने एक नई कंपनी अपना खोला, उस ट्रेंड को फॉलो किया और जीन्स बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। अगर आपके जीन्स में कुछ इनोवेशन नहीं होगी या कंफर्ट नहीं होगा, इनिशियली तो वो सक्सेस कर जाओगे आप, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपके जीन्स फेड होते चले जाएंगे, कोई दूसरी कंपनी आएगी, नई No, इनोवेट कर देगी वो।
I Sumit, disagree. I disagree. I Levi's disagree. Sumit, just a ज्यादा minute. साइज वाला जीन्स का नॉर्मल जीन्स है, क्या नॉट लिवाइस के जीन्स ईयर्स तक सेम ही है. Yeah, Quality exactly. innovations are Yes. ठीक two है different राइट राइट things. राइट ये सब Yes, सेम yes. है They ठीक है focus on their ओके ओके marketing and building brand loyalty rather than सेम innovation. सेम सेम लाइक टेस्ला ठीक है इनिशियली उन्होंने इनोवेट किया टाइम के बाद उन्हें पॉपुलैरिटी मिल गई तो उन्हें लगता है इनोवेट करने की जरूरत नहीं है ठीक है बट राइट नाउ मार्केट में हजारों ब्रांड हैं जीन्स के ठीक है और लिवाइस जितना सक्सेसफुल है उसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड है जो सक्सेसफुल है और उससे ज्यादा सक्सेसफुल है ठीक है अगर Give लेट्स them से लिवाइस ने लिसन टू मी अगर लिवाइस ने इनोवेट किया होता तो हो सकता है अभी लिवाइस नंबर 1 पे होता But jeans में और क्या innovation होगा सुमित? 1 second. ऐसा कुछ नहीं Levi's है हर अभी भी, हाँ बोलो बोलो let me give you the data. Levi's ने innovate नहीं किया. That is the reason why it is so successful. I still go back to Levi's to buy the same jeans जो मैं पहन रही हूँ. Levi's का मोटो ही वो It's है, because बस of originality. It's because of originality, ना because you correct. like the originality of the Yes. brand. But you also said कि आपने 2 points mention किए थे कि comfort Levi's का exactly the same है. Innovation हाँ and तो comfort are जब two different things. परफेक्ट है वही मैं कह रहा हूँ ना जो ओरिजिनलिटी है उसकी उसका इम्पैक्ट अभी तक है उसका इम्पैक्ट कम ही नहीं हुआ है But we राइट should collectively agree कि कुछ industries में ना innovation की requirement है No, ही no, नहीं Sumit, no. because One Sumit, second, one people second. Sumit, feel. हाँ just 1 second. Sumit, No, I hold give on, one hold on. give, Let me just make a point on that. अगर लीवाइस सिर्फ ट्रेंड फॉलो करके इनोवेट कर रहा है तो कोई और लीवाइस को बीट क्यों नहीं कर रहा? उसको ट्रेंड मालूम है, वो कॉपी करके बीट क्यों नहीं कर रहा लीवाइस को? So but it is not about beating Levi's, it's about being successful. तो नहीं मतलब तो वही मैं चलेंगे बोल रहा हूँ, काफी सारे लीवाइस brands. why is Levi's so successful Brand that nobody loyalty. can follow their trend and beat them on that trend, na? Or even compete with them on that trend. Thank you. Sir, there's a company named sir. Spiker. Sir, I It is give from one India. एक मिनट example. They जावेद are बोलो competing with जावेद Levi's. बोलो. Sir, I give one example. In the Indian mobile market, October 2025, Vivo are leading smartphone vendor. According to data, July and August 2025, Vivo mobile phone is one of the leading mobile phone in India, holding 21 per market share, 21% market share. तो उसमें ऐसा क्या इनोवेशन और ऐसा क्या किया वीवो ने? तो तुम्हें वीवो इज वीवो सच ने कुछ ब्रांड इनोवेट नहीं ना. किया क्या बात कर रहे हो यार Yeah, that there are lot of mobile companies in Indian market. हाँ They have same technology, use same सी technology, सी सी but सी Vivo have ranked वीवो number one in ये एक मिनट कंप्लीट holding करने देना 21 सुमित. ओके ओके Sumit, why holding don't you to, let him complete, na? Let him complete his holding point. to, holding 21% market share. So uh, my my conclusion is that कि ऐसा innovation और technology likewise Vivo तो 21% मार्केट शेयर होल्ड कर रहा है इंडिया में. यही वो मैं तो बोलना इतना चाह रहा मार्केट शेयर, तुम्हारा क्या गेस है जावेद? वो क्यों इतना मार्केट शेयर होल्ड कर रहा है? तुम्हारा क्या गेस है? हूँ. पॉपुलैरिटी की वजह से सर. वन सेकेंड एक क्वेश्चन है पॉपुलैरिटी मेरा कहाँ एक से क्वेश्चन है आएगी? मेरा And जावेद affordability also. लिसन लिसन तुम या इंडिया की बात या कर रहे हो वर्ल्ड की बात कर रहे हो इंडिया की बात कर रहा हूँ. इंडिया की बात कर रहे हो ओके 21% One more thing I want to point out about these following trends. So much amount of copying and following the trends goes on that in fact, even fake labels of Levi's will sell just by following the trends. And this copying and selling fake labels has been always there. Like it never stops. They always have that market. But So there is a difference between copying a trend and copying an innovation. They're not the same thing. Sir, I would like to add one thing over here. Mhm. So I wanted to give an example of everybody knows everybody goes to a market, right? Everybody has their markets in the nearby localities. Let's say a vegetable market, a food market, right? Sure. So it's a market, right? Everybody has a following a certain trend, a certain direction on a specific date that they have to put their stalls of vegetables over there, right? And the crowd also knows that on so and so date, on so and so time, the market will be there. So if a new businessman want to become a vegetable vendor or want to sell vegetables, if he simply follow the trend and goes to that market and put a stall, he would be able to do a business. He will be able to make sales over there. He'll be able to
sell his vegetable or whatever he's selling on the stall. Why? Because he's following the trend, he's following what is going on from a long duration. That's the best and simplest examples which just defines that innovation doesn't require to be successful. If you follow a simple trend, you can be successful, you can make money or whatever is your goal is, you can achieve it just following what others are doing. So if we see in other way, we innovate a new place, we find a new place, like let's say if I think that no, I am a vegetable vendor, wanted to innovate a new place, I'll go somewhere else, sit in a dark place where nobody is coming up, and I'll sell my vegetables, I'll be ended up doing no business, right? No, no, Because I no. have doing something different which is not being followed by others. So that's a example which Yeah. defines that following can be successful. No, Okay. but Okay. Josefa, I would like to say something on that part that you are saying like a vegetable vendor outside, right? See, personally, like एक बंदा है जो वेजिटेबल बेच रहा है, ठीक है, अभी अदर पर्सन स्टार्टेड थिंकिंग कि ठीक है यार अभी ट्रेंड चल रहा है, वेजिटेबल बिक रहा है, मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ. सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी टू कस्टमर की उसकी दुकान पे आएंगे, आएंगे तो So फर्स्ट if उसकी you दुकान पे. यू अग्री? नहीं, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता ना, आप अगर लेट आप मी किसी मार्केट में लेट जाते मी हो, सुनो. कंप्लीट लेट मी ओके, कंप्लीट गो अहेड, जोसेफ, गो अहेड, लेट मी कंप्लीट एट गुड, लीस्ट, गुड, लेट गुड, मी. गुड. सो द पॉइंट इज, इफ अनदर वेंडर सेज कि आप जस्ट सिर्फ मुझे अपना रेसिपी सॉरी डिश बनाओ, डिश बताओ कि आपको क्या बनाना है और कितने लोगों के लिए बनाना है, एंड दिस एंड द वेजिटेबल विल बी एट योर होम अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन क्वांटिटी. सो नाउ यू टेल मी, अगर उसने इतना इनोवेट किया तो अभी क्लाइंट किसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा या दूसरे बंदे के पास जाएगा? वो आपको निशांत, लगता I है कि would डिश बना के देगा मार्केट में? डिश नहीं, डिश के अकॉर्डिंग सारे इंग्रेडिएंट्स आपको ऑलरेडी घर पे बेच के देगा, कितने अकॉर्डिंग लोगों के हिसाब से चाहिए. तो वो अपना स्टोर का लाया करेगा मार्केट में ही? हाँ हाँ, ऑब्वियसली. वो अपना. और बिसाइड योर. आपको लग रहा है कि ऐसे ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप जैसे बोल Okay. रहे हो Okay. कि मैं If एज एन कस्टमर मार्केट जाऊंगा एंड मैं ऐसे स्टोर के पास जाऊंगा जिनपे मेरे को सारी चीजें चाहिए, और मैं उनको बोलूंगा ठीक कि है, मेरे घर पे डिलीवर ठीक है, करो. ठीक है, निशान, निशान, Does it हुजैफा, make any वन सेकंड, sense? हुजैफा, वन सेकंड, It वन makes सेकंड. sense. मैं Obviously, in a market where everybody is there is no, like अगर आप वेजिटेबल मार्केट जाओगे तो वहां सिर्फ एक जन चलो, नहीं होता ऑडियंस है का जो टाइम खत्म हो गया. भिंडी बेच रहा है. ऑडियंस का टाइम खत्म हो गया. 3 क्वेश्चन हो गए हैं. यस. One team is ahead of the other team by 50 points. But I Right. will not announce which of the two teams is ahead. So the two teams have to decide whether they want to take the fourth question or not. Rohit, Riya, what do you think? लेना है fourth question? नहीं लेना? Sir, we are fine with 3 questions only. अच्छा, Yeah, तुम Yes. I'm दोनों also fine. I'm also fine, sir. ठीक है. So the winner is the product development team. They got 115 points, and the sales team got 65 points. Okay. Yes, sir. Excellent. And the topics themselves make these debates very interesting, especially the fact that that both sides, I think, have an equal opportunity to beat the other side. I mean, the research was definitely good on both sides, definitely no doubt about that. But I think towards the end, the product development team got ahead both in logic and presentation. So good job, both teams. Excellent participation. If you want to Thank you, know the sir. exact scores, the logic scores were 42 for product development, 18 for sales. For research, 39 for product development, 21 for sales. And for presentation, 34 for product development and 26 for sales. Thank you, sir. Okay, Anyway, we thank have you. ample time if anybody wants to discuss further. The topic is interesting. So if anybody सर wants इसका to इसका continue. कंक्लूजन क्या निकला अब एट द एंड? डू वी हैव टू फॉलो ट्रेंड और वी शुड इनोवेट? इसका क्या कंक्लूजन सर, निकला? आई डोंट. डिबेट्स के कंक्लूजन निकलने लगे तो वो डिबेट नहीं कहलाएगा. Right. Debates की conclusion नहीं होते हैं. तो नो कंक्लूजन. Right, right, right. कंक्लूजन कभी नहीं निकलेगा. It is always about seeing the two sides, what kind of points they are making. They make you think, that's all. So I think innovation requires taking risks, while following trends is a safe bet. So it's up to you I how to disagree decide. with that. I'll tell you what. There's this saying that says invention, necessity is the mother of all invention. I Yeah. think boredom is the father of all invention.
आदमी बोर हो जाता है तब वो इन्वेंट करता है बैठ के। एग्जैक्टली राइट सर, सही 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 है। तो Sir, can we play the ad once more? Sure. sure, why not, we have Yes. time. Okay. Every trader knows the stress, watching markets rise and fall, wondering if this time you'll finally get it right. But what if trading could feel different? What if you could grow your wealth without anxiety or overthinking? Introducing the stressless trading method, powered by the Kosh app, a revolutionary way to generate a steady monthly income with zero stress and zero guesswork. Join the Stressless Trading Method webinar, a session that could change the way you trade. Watch how the Kosh app automates trading, manages risks, and generates consistent income even during market crashes. No prior experience needed. If you want to experience stressless, consistent wealth creation, this is your moment. Join the Stressless Trading Method webinar on Friday at 7 p.m. IST. ब्रो एक बार replay करना यार first 10 seconds. Okay, sure. Let me see the hook. Sure. Manages risks and स्टार्टिंग generates से प्ले करना, consistent स्टार्टिंग income से प्ले even कर। during market crashes. No prior experience needed. First 10 seconds, bro. If First you 10 want to seconds, experience starting से। stressless, consistent wealth creation, this Read is your moment. Join the Yes, from the sir. beginning ना, read from the beginning. Okay. Every trader knows the stress, watching markets rise and fall, wondering if this time you'll finally get it right. But what if trading could feel different? What if you could grow your wealth without anxiety or overthinking? Introducing the Stressless Trading Method, powered by the Kosh app, a revolutionary way to generate a steady monthly income with zero stress and zero guesswork. Join the Stressless Trading Method webinar, a session that could change the way you trade. Watch how the Kosh app automates trading, manages risks, and generates consistent income even during market crashes. No prior experience needed. If you want to experience stressless, consistent wealth creation, this is your moment. Join the Stressless Trading Method webinar on Friday at 7 p.m. IST. कैसा लग रहा है हमारा ऐड का क्वालिटी कमलप्रीत? सर ये फर्स्ट 10 सेकंड्स में पता नहीं चल रहा अभी अपने क्या डिफरेंशिएटर क्रिएट नहीं हो रहा कुछ भी. अच्छा, बिकॉज फर्स्ट 10 सेकंड्स में भी हम स्क्रॉल करते हुए आ रहे हैं और फर्स्ट 10 सेकंड्स में कोई हमारे जैसे अब कोई ट्रेडर है उसके मन की इच्छा ये है कि यार एक स्ट्रेटजी अपने आप डिप्लॉय हो जाए और वो ना जो मेरे मन की स्ट्रेटजी है मतलब कहने का मतलब कि मैं उसको सेट कर दूं और अपने आप चलती रहे. सो वो फर्स्ट 10 सेकंड में वो मैसेज पास होना चाहिए भी हाँ भी एक्चुअली व्हाट वी गोना डिलीवर. तो ये अच्छा, सिर्फ जेनरिक ऐड लग रहा है सर. इसको थोड़ा बहुत स्क्रिप्टिंग सही कर सकते हैं अपने इस चीज की. ठीक है, थैंक्स। मिल गया ना फीडबैक दीप, अपन थोड़ा करते हैं इस पे काम, ठीक है? Sure. फर्स्ट 10 सेकंड्स में ब्रो कुछ ऐसे डिफरेंट हुक्स ट्राई किए जा सकते हैं. ये जेनरिक है काफी. आई मीन Sure. मत मानना क्योंकि ऐड बनाने वाले को काफी बुरा लगता है कभी कोई उसका क्रिटिसिज्म कर दे तो. नहीं, यहाँ किसी को कुछ बुरा नहीं लगता। ये लोग मेरे से हर रोज इतना डांट खाते हैं ना, इनको बुरा लगना बंद हो गया, राइट? हाँ सही है, अच्छी बात है. फर्स्ट 10 अच्छा, सेकंड में एक पता बात लगना मेरे को चाहिए बोलना है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के बारे में। यू हैव डिबेटेड ट्वाइस एंड बोथ हैव बिकम सोलो एफर्ट्स। इसमें मजा नहीं आ रहा। You have to make sure how do you make it a team effort. It is all becoming solo right now. पहली बार सैफ ने किया, इस बार सुमित ने किया. You guys have to get your team in shape, right? Okay, sir. I'll talk with them. Go ahead, कमलप्रीत, आप बोल रहे थे कुछ. या फर्स्ट 10 सेकंड्स में यार इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने खुद के बिहेवियर को अपने को नोटिस करना चाहिए कि हम पहले में डिसाइड कर लेते हैं 3 4 5 सेकंड में ही कि दैट वी विल वॉच द फुल वीडियो और नॉट. तो Right. फर्स्ट 5 7 सेकंड में हमें बताना पड़ेगा कि व्हाट वी आर डूइंग डिफरेंट. जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना 2 4 ऐड देखना और वो उन 2 4 एड्स को शेयर कर देना इधर उधर तो आपके पास सारे वो एड्स प्ले होने लग जाएंगे जितने भी लोग कर रहे हैं. तो तो किसी उसमें से अपने को किसी इतना तरह हिट आप मिलेगा. बोल रहे हो हमको पिछले 10 सेकंड, पहले 10 सेकंड में ही दिखाना है कि पहले आपका 10 सेकंड में कैश कभी डिफरेंशिएट खत्म करना नहीं चाहिए. होगा, राइट?
हाँ, यस, ये बात बोलनी चाहिए कि इमेजिन आप स्ट्रेटजी, आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जो आपको मंथली इंटरेस्ट से ज्यादा रिटर्न दे, 3 या 4%। या जो हम जिसमें आपको कभी ये फील ही ना हो कि आपका कैश खत्म हो गया। हाँ, जिसमें, हाँ, या ये भी हो सकता है, या फिर जी। हम उसके हमें कंपेयर किससे कर रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड वालों से कंपेयर कर रहे हैं या फिर हम मंथली इंटरेस्ट या मंथली कोई स्टेबल इनकम से कंपेयर कर रहे हैं। तो वी शुड स्टार्ट विद, हाउ अबाउट वी गिव यू अ स्ट्रेटजी जो तुम्हें 4 से 5% मंथली फिक्स रिटर्न देगी मिनिमम। तो हम इस चीज से स्टार्ट कर सकते हैं बात को, नहीं, क्योंकि नंबर्स वो, नहीं बोल सकते बिकॉज फिर से भी आ जाएगा। हाँ, सिर्फ मतलब मिनिमम रिटर्न, मंथली रिटर्न देगी मोर देन एवरेज इंटरेस्ट रेट्स एंड मोर देन एफडी या फिर मोर देन योर फेवरेट म्यूचुअल फंड, उससे ज्यादा रिटर्न देगी मंथली। कुछ भी किसी चीज को ऐसे कर सकते हैं सर, घुमा फिरा के बोल देंगे। वो रिटर्न का चक्कर ये है ना, रिटर्न की स्टोरी बहुत लोग बोलते हैं, ये रिटर्न शब्द ना, it again makes the ad generic nowadays. I'm just discussing with you because you are in the mood, right? हम्म। लेकिन यस अपने सर। को ऐसा ऐड चाहिए जिसमें रिटर्न फिटर्न की बात ही ना हो, राइट? बात यह है कि हमको तुम्हारे अंदर फीलिंग क्या जनरेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली, टुडे वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रेंड्स एंड एवरीथिंग। यूजुअली पीपल थिंक, जो भी बात हुई उसमें यही बात बार बार आ रही थी कि trends cover the needs that are present in the society. Actually, products don't succeed because of needs in the society. They succeed because they capture the imagination of the audience, या ट्रू ट्रू ट्रू। right? तो वो तो आप वही चीज ऑडियंस को का फिर, इमेजिनेशन कैप्चर कर पा रहे हो कि नहीं, वो पहले 10 सेकंड में, दैट इज इम्पोर्टेंट। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो क्या इमेजिनेशन सर, सबकी जो अभी देखा जाए, ट्रेडर्स की जो भी कर रहे हैं डेली ट्रेड, उनके दिल में यही इच्छा है कि यार हमारी स्ट्रेटजी डिप्लॉय हो जाए और वो अपने आप कर ले। नहीं, सो ये उनके दिल चीज में अपने अच्छा माइंड है, पे। उनकी दिल में ये इच्छा है कि मैं सवेरे उठ के पैसे हवा में फेंकूं, ये उनकी इच्छा है। वो तो पैसे का अपने नाम नहीं ले सकते ना सर। हमें यही बताना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेटजी चल जाएगी और वो बड़ा सिंपल होगा, और वो उस चीज पे हमने प्ले कर सकते हैं। एल्गो Right. वाले भी काफी, मतलब कि अब जैसे अपने इतनी बारी अपने डिस्कस करते हैं, आई एम श्योर आपके फिर उसकी एल्गोरिदम पे बार बार यही एड्स आएंगे। मेरे भी सारी यही एड्स आने लग गए कि एल्गो वाले काफी बंदे ऑलरेडी आ चुके हैं मार्केट में, बट उनके भी सैचुरेटेड है ऐड काफी। वो सिर्फ Right. ये बोलते हैं हम एल्गो ट्रेडिंग करवाते हैं, आपकी एल्गो ट्रेडिंग करवाते हैं। तो हमें कुछ एक भी एक मैंने ऐड देखा था, वो यही बोलता है कि ये स्ट्रैटेजी हर स्ट्रैटेजी का बाप है। right? और कुछ बोलता ही नहीं। देयर इज नो इंडिकेशन कि है क्या वो स्ट्रैटेजी। ऑल ही सेज कि सब स्ट्रैटेजीज का बाप है ये। सो डेफिनेटली या देयर फिर नीड्स टू बी या समथिंग फिर हम अपने एक्स्ट्रा कैश को, दैट। जैसे हमारे पास पॉइंट्स है ना सर, एक्स्ट्रा कैश का पॉइंट है एक भी यार, राइट। हमारी स्ट्रेटजी से आप एक्स्ट्रा कैश कमाते हो। एक हमारे पास पॉइंट है कि हमारी स्ट्रेटजी ऑटोमेटेड है और काफी सिंप्लीफाइड है। ठीक है, ये 2 पॉइंट मुझे यूनिक लगते हैं, तो हम या तो एक्स्ट्रा कैश। चलो मैं एक और पॉइंट बताता हूँ तुमको। अ यस सर। स्ट्रैटेजी दैट नेवर मेक्स यू फील लाइक अ लूजर। ये दिस इज एक्चुअली अ गुड हुक, चूज राइट। किया जा सकता है। या कभी तुमको लॉस का फीलिंग ही नहीं आएगा इस स्ट्रैटेजी में। राइट राइट, पर पोर्टफोलियो फिर क्या भी कर रहा है वो ये दूसरी बात है, बट यू वोंट फील लाइक अ लूजर, दैट्स ऑल। या दैट इज आल्सो गुड पॉइंट। सही है। या अपन फिर मिल ये भी कब रहे हैं कमलप्रीत, ये बताओ। सर, ये तो आप जब भी हुक्म करोगे आ जाएंगे नागपुर। ठीक है, आओ। नागपुर या मैं नागपुर आओ या मेरे मुझे बुलाओ, दोनों में से मेरे को दोनों चलेंगे तो। सर, आप गंगानगर अच्छा आ देखो, सकते हम ये हो। सोच रहे हैं, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। यस सर। आपने बोला था लास्ट टाइम आप जहाँ रहते हैं वहां सब गैम्बलर्स हैं। या अगले वीक हम एक टाउन हॉल करना चाह रहे हैं। डजन डायमंड्स ओपन टाउन हॉल फॉर गैम्बलर्स। सर, एक्चुअल में बात पता क्या है, अब 2 टाइप के गैमलर्स होते हैं। ठीक है, एक तो मेरे जैसा, मैं मान लेता हूँ कि यार जो जिसका लॉस हो गया है, चलो मैं मान लेता हूँ, और एक जो मेरे जानकार है, उनको वो काफी प्रॉफिट में है। उनको कोई अच्छा। चीज बोलना ना, भाई तेरे को वहां बुला रहे हैं, वो कहेगा मेरे को कहीं पे नहीं जाना दुनिया में। अच्छा। और ना अपन उनको नहीं उनको नहीं, बोल मतलब देंगे पचास रिक्रिएशन हजार के रुपए लिए लाख कुछ तो रुपए, वो करते नहीं होंगे आएंगे ना। उस पर। एंटरटेनमेंट सॉरी के लिए कुछ तो करते होंगे, नहीं? सर, वो उनके अलग, मतलब मैंने जो जितने भी नोटिस करे हैं ना सर, मतलब कि या गैमलिंग या ट्रेडर, उनके सर वो काफी रिचुअल फॉलोइंग लोग होते हैं, उनका सब रूटीन फिक्स होता है, उन्होंने एक ही चीज करनी है। तो ये मतलब एक ही पॉइंट अगर मैं कॉमन बताऊं किसी का, तो मैं ये पॉइंट ही बताऊंगा, अभी जितने भी देखे हैं मैंने जो ऑलरेडी इस लाइन में है और इस लाइन में सक्सेसफुली पैसा कमा रहे हैं,
उनके काफी एक रिचुअल सा होता है काम करने का। वो उस चीज अच्छा, को कभी भी वो नहीं करते, चेंज नहीं कर। उसके उसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो अपना ही करेंगे जो करेंगे, क्योंकि अच्छा, ऑब्वियसली सब अपने पैसे के लिए सब कर रहे हैं, और पैसा एक बार आने लग गया तो वो उनका एक एक बिलीफ सिस्टम है कि हाँ अब ये नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे तो पैसा चला जाएगा। अच्छा, 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 ठीक है, समझ गया आपका पॉइंट। कुछ नया हुक ढूंढना पड़ेगा हमें भी आपके आपके शेयर के लिए। ठीक है, ठीक है गाइस, रैप अप करें। Yeah, okay, sir. थैंक्स अ लॉट बोथ द टीम्स। Thanks, guys. मैं स्कोर्स पोस्ट करता हूँ थोड़ी देर में। Okay, sir.